विंडो स्क्रीन आ जाए तो फिर मैं शेयर करता हूँ। Okay, ji. So let's start today's lecture. This will be part 3 of the chapter 6, securing information system. We were discussing the issues which are there, challenges which are there in securing information systems. So some of the issues we discussed in first two lectures. Now, in this lecture, we'll be focusing on computer crimes. We'll be focusing on software vulnerabilities, cyber vandalism. These are the topics which we'll be covering today. Starting with the computer crimes, most hacker activities are let's start from here. Computer crimes. Most hacker activities are criminal offenses, and the vulnerabilities of system we have just described make them targets for other types of computers as well. Computer crime is defined by the US Department of Justice as any violation of criminal law that involve knowledge of computer technology for their presentation. That involve a knowledge of computer technology for their perpetration, investigation, or prosecution. ठीक है, तो it's a criminal. It's a violation of criminal law. ठीक है, which that involves computer technology. Based, it's a crime which is based on computer technology, जिसके through आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. Now, some of the examples of computer crimes are provided in this table 8.2 here, this slide. Okay, so examples of computer crime, computer as target of crime. ठीक है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज करके यानी उसको टारगेट बनाया जा रहा है फॉर क्राइम. उसमें क्या चीजें आ सकती हैं? ब्रीचिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोटेक्टेड कंप्यूटराइज्ड डाटा. ठीक है, ये इसमें आ सकता है. एक्सेसिंग a computer system without authority, that can be an example of computer crime. Knowingly accessing a protected computer to commit fraud, this is another example. Intentionally accessing a protected computer and causing damage negligently or deliberately, and knowingly transmitting a program code or command that intentionally causes damage to a protected computer, that threatening to cause damage to a protected computer. ठीक है, तो ये सारे इसमें वो एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर क्राइम की जिसमें कंप्यूटर इज where the computers are the target of these crimes. Then we have other examples where computer can be used as instruments of crime. यानी आप कंप्यूटर को यूज करके different type of crimes जो commit कर रहे हैं, जिसमें theft of trade secrets can be an example. Unauthorized copying of software or copyrighted intellectual property such as articles, books, music, and video. Schemes to defraud, using email or messages for threats or harassment. Intentionally attempting to intercept electronic communication, यानी कोई communication हो रही है जिसको आप you are trying to intercept that communication. Illegally accessing stored electronic communication including email and voicemail. ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर के ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जिसको आप जो है वो you want to access that or you want to steal that information. And transmitting or possessing child pornography by using a computer. These are the examples of computer crimes where the computers are used as an instrument. ठीक है, तो कुछ crimes ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर को टारगेट बनाया जाता है और उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है illegally. Those are the examples where computers are used as targets, and the other examples which we discussed are those examples where computers are used to commit some crime. Okay, so no one knows the magnitude of the computer crime problem, how many systems are invaded, how many people engage in the practice, or the total economic damage. ठीक है ना, तो ये क्योंकि रिपोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्राइम्स जो है रिपोर्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगाना कि इस कंप्यूटर क्राइम की वजह से
कितने नुकसान हो रहे हैं, टोटल इकोनॉमिक डैमेज कितना हो रहा है, कितने लोग इसको की वजह से सफर करते हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो. According to Ponmon's Institute's 2015 annual cost of cybercrime study, the average annualized cost of cybercrime for US companies benchmarked was $15 million per year. Okay, so that is only an estimate for the US companies. So, uh, but it gives us an idea that it's a very the economic consequences of this computer crime can be very heavy. Many companies are reluctant to report computer crimes because the crimes may involve employees, or the company fears that publicizing its vulnerability will hurt its reputation. ठीक है ना. तो ये मैंने जैसे पहले बताया था कि कंप्यूटर क्राइम्स का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड एस्टिमेट करना उसका मुश्किल है, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट रिपोर्टेड. यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि कंपनीज रिपोर्ट नहीं करती हैं. उसकी वजह ये कि दे आर फेयर कि जी उनके एम्प्लॉयज का डाटा होगा तो एम्प्लॉयज रिजेंट करेंगे कि जी हमारा डाटा कैसे लीक आउट हो गया, या अगर वो रिपोर्ट करते हैं तो उस कंपनी के बारे में बैड रेपुटेशन डेवलप होगी कि जी कंपनी, इसका मतलब है सिक्योर्ड नहीं है कि उसका डाटा जो है वो दैट इज बीइंग एक्सेस्ड बाय अदर पीपल. The most economically damaging kind of computer crimes are denial of service attacks, activities of malicious insiders, and web-based attacks. ठीक है. तो ये एग्जांपल्स जो हैं इसकी उन उन कंप्यूटर क्राइम्स की जिसमें दे विच इन्वॉल्व सम फाइनेंशियल इम्पैक्ट, यानी इकोनॉमिकली जो आपको हर्ट करती हैं वो ये हैं. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कैन इकोनॉमिकली हर्ट अ कंपनी और अ वेब्स और एनी ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली जो मलेशियस इंसाइडर्स हैं, एक्टिविटीज ऑफ मलेशियस इंसाइडर्स के जिन लोगों ने दोज हु आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फिर वो उस की इंफॉर्मेशन को इलीगली पास ऑन करते हैं या स्टील करते हैं, तो उससे नुकसान होता है. एंड थर्ड इज द वेब बेस्ड अटैक्स के वेब इंटरनेट को यूज करके जो इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट की जाती है, इंफॉर्मेशन स्टील की जाती है, इलीगली कॉपी की जाती है. इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसमें आपको ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज का सामना करना पड़ता है. Okay, now another we will discuss one of the types of computer crime, which is identity theft. With the growth of the internet and electronic commerce, identity theft has become especially troubling. सर स्क्रीन शो हो रही. स्क्रीन शो नहीं हो रही. शेयर है. मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ. दोबारा शेयर कर लेते हैं. Hold on. Why it is not दोबारा शेयर कर लेते हैं. जी आप शो हो रही है. जी सर. ओके. वो फिर आपका कोई बटन ना दब गया, क्योंकि मेरे पास तो शो हो रही थी. ठीक है. अभी अब तो विजिबल है ना. जी स्क्रीन इज जी देयर. सर. Okay, so we are talking about identity theft. With the growth of the internet and electronic commerce, identity theft has become especially troubling. होता क्या identity theft? Identity theft is a crime in which an imposter obtains key pieces of personal information such as social security numbers, driver's license numbers, or credit card numbers to impersonate someone else. अच्छा, अब चूंकि आपकी ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, और अगर हम अमेरिकन सिस्टम की बात करें तो वहां पे ये तीन इंफॉर्मेशन जो है ना, दे आर वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन. कि अगर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर किसी को पता चल जाए तो वो उस सोशल सिक्योरिटी नंबर को मिस यूज कर सकता है. सिमिलरली अगर उसको आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मिल जाए तो दैट कैन बी मिस यूज. और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर क्रेडिट कार्ड. तो अगर वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी बंदे के हाथ लग जाती है तो उससे फिर वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है. तो आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर हम यही काम कर रहे होते हैं कि किसी बंदे की आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी कौन सी है, जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है. ठीक है ना. एक बंदा ऑनलाइन को एक्टिविटी करता है तो वहां पे उसकी जो आइडेंटिटी है दैट इज दीज थ्री पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें उससे पूछी जाती हैं या इससे उसको रिकग्नाइज किया जाता है कि जी वो
हु इज दैट पर्सन। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन कोई किसी और बंदे के हाथ लग जाए तो वो फिर आपकी जगह पे वो ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर सकता है, या वो आपकी जगह पे उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए पीपल ट्राई टू स्टील, दोज पीपल हु हैव malicious इंटेंट, दे ट्राई टू स्टील दिस इंफॉर्मेशन। इसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। The information may be used to obtain credit card, merchandise, or services in the name of the victim or to provide the thief with false credentials. Identity theft has flourished on the internet, with credit card files a major target of website hackers. ठीक है। तो ये जनाब इसमें वो जैसे मैंने पहले कहा कि इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे किया जाता है, तो मोस्टली इससे आप क्रेडिट ले सकते हैं, परचेज ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, और इसी तरह से कोई और सर्विसेज आप ले सकते हैं यूजिंग द नेम ऑफ द विक्टिम, जिससे सर्विस कोई और एंजॉय कर रहा होगा, और वो दैट चार्जेस विल बी borne by the person borne by the victim. According to the 2016 identity fraud study by Javelin Strategy and Research, 13.1 million consumers lost $15 billion to identity fraud in 2015. ठीक है। तो ये एक एस्टिमेट, एक स्टडी कंडक्ट हुई, उसके अंदर आइडेंटिटी थेफ्ट का जो है एस्टिमेट लगाया जाए कि इससे नुकसान कितना हो रहा है। तो 13.1 मिलियन कंज्यूमर्स के ऊपर ये स्टडी बेस की गई, एंड the finding was that they lost 15 billions to identity theft only in 2015। सिर्फ एक साल में 15 बिलियन का नुकसान हुआ, 15 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ to the consumers due to this identity theft, which are very huge amount. E-commerce sites are wonderful sources of customer personal information, नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। ज़रा ई कॉमर्स में जब आप प्लेस करते हैं अपना ऑर्डर, तो आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, एंड दोज आर द टारगेट्स के जहाँ से ई कॉमर्स साइट से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। Armed with this information, criminals can assume new identities and establish new credit for their own purposes। ठीक है। तो अगर आप कोई आपकी इंफॉर्मेशन स्टील कर लेता है, तो फिर वो उसको मिस यूज करके ऑर्डर प्लेस कर सकता है, चीजें ले सकता है, और अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओके जी। Another type of computer crime is called phishing. One increasingly popular tactic is a form of spoofing called phishing। अच्छा, ये phishing P से है। So phishing involves setting up fake websites or sending email messages that look like those of legitimate business to ask user for confidential personal data। ठीक है ना। तो अब ये फिशिंग में क्या है, आपने एक फेक वेबसाइट बनाई है, और उसमें यानी दैट लुक्स लाइक द ओरिजिनल वेबसाइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन दराज की एग्जांपल ले सकते हैं कि जी दराज.com की एक कोई किसी ने उसकी जो है ना वो रेप्लिका वेबसाइट क्रिएट कर ली, दैट इज फेक वेबसाइट। तो अब आप अगर इफ यू बाय मिस्टेक यू आर कनेक्टेड विद दैट वेबसाइट, वहां से आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं, तो बेसिकली वो आपकी इंफॉर्मेशन गलत हाथों में जा रही है, तो वहां से वो आपकी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं। The email messages instruct recipient to update or confirm records by providing social security numbers, bank and credit card information, and other confidential data, either by responding to the email message, by entering the information at a bogus website, और by calling a telephone number। तो ये तीन तरीके से फिशिंग की जाती है। या तो आपको जो है वो कोई ईमेल मैसेज ऐसा आता है जिसमें वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि जी अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दें। जैसे एफबीआर की वेबसाइट, जी हम आपको एफबीआर से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो अपनी जो अकाउंट नंबर अपडेट कर दें। या इसी तरह से कोई बोगस वेबसाइट, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि रेप्लिका वेबसाइट है और बोगस है, वो आपकी इंफॉर्मेशन ले सकती है। या ये तो बहुत दफा आता है, टेलीफोन कॉल्स आती हैं जो आपको कहते हैं कि जी हम फलां बैंक से बात कर रहे हैं, तो आप अपना जो अकाउंट नंबर कंफर्म कर दें, अपना पिन नंबर वेरीफाई कर दें। तो आपने अकाउंट नंबर और पिन नंबर दे दिया, तो बस वो दैट इज इट। वो तो फिर आपकी वहां से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन दे कैन कंडक्ट। eBay, PayPal, Amazon.com, Walmart, and a variety of banks have been among the top spoofed companies। ठीक है। तो अब इसमें जैसे जिन कंपनीज को बेस बनाया जाता है,
उनमें ये जो 4-5 मेन कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, ईबे जहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, पेपॉल इज अ पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी, अमेजोन जो है इट्स अ वेब स्टोर, वॉलमार्ट जो है इट्स अ रिटेल चेन। ये सारी और इस तरह से बैंक्स जो हैं, दीज आर द मेन कंपनी जिसमें फिशिंग की गई है। इन अ मोर टारगेटेड फॉर्म ऑफ फिशिंग कॉल्ड स्पेयर फिशिंग, messages appears to come from a trusted source such as individual within the recipient own company or a friend। अच्छा, स्पेयर फिशिंग में ये है कि जी वो मैसेज आपको लगता ही है कि किसी आपके जानने वाले बंदे ने भेजा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये एक इसमें स्पेयर फिशिंग जो है ना वो भी इट्स अ फॉर्म ऑफ फिशिंग के जिसमें द मैसेज इज कमिंग अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, ठीक है, जिसको आप जानते हैं, और ये आपकी वो क्या कहते हैं उसको, आपके जो कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट में उसका नाम है, वहां से आपको लगता है कि मैसेज आपको रिसीव हुआ, बट एक्चुअली इट्स अ फेक मैसेज। फिशिंग टेक्निक्स कॉल्ड इवल ट्विंस एंड फार्मिंग आर हार्डर टू डिटेक्ट, ठीक है। तो फिशिंग में ये दो इसकी टेक्निक्स हैं। इवल ट्विंस आर वायरलेस नेटवर्क्स दैट प्रिटेंड टू ऑफर ट्रस्टवर्दी Wi-Fi connections to the internet, such as those in airport lounges, hotels, और coffee shops। ठीक है, तो इवल ट्विंस में आपको वाईफाई के थ्रू जो है ना वो ट्रैप किया जाता है। पब्लिक वाईफाई है, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, कॉफी शॉप्स में जाते हैं, तो वो पब्लिक वाईफाई सिस्टम्स हैं। वहां पे फिर आप अगर आपने कोई, इफ यू आर कनेक्टिंग टू सम अदर वेबसाइट और वहां पे कोई आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली ट्रैप्ड बाय these uh, these illegal people who are doing the illegal activity। Okay, the bogus networks look identical to a legitimate public network. Fraudsters try to capture password or credit card numbers of unwitting users who log on to the network। अच्छा, तो ये तो इवल ट्विन की बात थी जिसमें बेसिकली बोगस नेटवर्क यूज किया जाता है। और फार्मिंग जो है, अगेन दिस इज फार्मिंग इज it redirects user to a bogus web page even when the individual types the correct web page address into his or her browser। This is possible if farming perpet- perpetrators gain access to the internet address information internet service providers store to speed up web browsing, and the ISP companies have flawed software on their servers that allow the fraudsters to hack in and change those addresses। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मिंग में वो जो है आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं, यानी आपने टाइप इन अपना जो वेब एड्रेस है वो तो सही टाइप किया, लेकिन दैट इज बीइंग हैक्ड, दैट हैज बीन हैक्ड, तो उसकी वजह से फिर आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं टू द बोगस वेबसाइट। तो इस तरह से जब आप वहां पे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो दैट इज एक्सेस बाय इलीगल पीपल। सो हियर आई थिंक वी कैन हैव अ ब्रेक। ठीक है जी, ठीक है सर। 10 o'clock वाली मीटिंग है, तो आई विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। ठीक है सर।